सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन डिस्कस करने जाते हैं एंड वो भी वेज कॉन्स्ट्रेंट है ना। आप लोगों ने स्टडी किया होगा वेज कॉन्स्ट्रेंट। सब कैलकुलस वैलकुलस यूज़ करते हैं, बट वी विल नॉट यूज़ दैट कैलकुलस एंड ऑल दोज थिंग्स। वी विल डू इट इन अ वेरी सिंपल वे। और आज हम आपको शॉर्टकट टेक्निक सिखाएंगे। ये देखिए कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन जो है ये रहा एक वेज है ना। वेज माने द इंक्लाइंड प्लेन एंड इट मेक्स एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड सपोज देयर इज अ रॉड एंड द रॉड is guided so that it will move in a vertical path only. So you have to find, and suppose the velocity of the rod, obviously the rod will go down, velocity of the rod is v2, and say velocity of the wedge will go to the right. So velocity of the wedge would be v2, so along the ground. So what is the relation between v1 and v2? And similarly you can find the relation between the accelerations a1 and a2. So without using calculus we will use here relative velocity technique. So let's have this point P. Now you know we will use relative velocity technique. So you know velocity of P with respect to wedge. देखो P ये W for the wedge है, that means the inclined plane. Velocity of P with respect to wedge is velocity of P minus velocity of wedge. So as you know, from the wedge, looking from the wedge, the rod will actually move in which direction? Or say looking from the wedge, से आप ये वेज में खुद आप वेज में जाके बैठ गए, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो वेज में. सो वेज में बैठ के क्या देखोगे आप? पॉइंट पी ये इधर नीचे जा रहा है स्लाइड होके या फिर ऊपर जा रहा है स्लाइड होके. सो दैट मीन्स सो रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी उसका जो बात है, दैट मीन्स वी पी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, that Vp with respect to W is either this way or that way. That means it is parallel to this inclined surface, that relative velocity. So यहाँ पे ड्रॉ करता है Vp, यहाँ पे ड्रॉ करता है Vp and minus Vw. ये देखो minus velocity of wedge. So this becomes the velocity of point P with respect to wedge and this angle is theta. Now अभी ये ट्रायंगल को फिर से देखते हैं हम लोग कि ये है रॉड ऐसा है V1, रॉड का V1 है, वेज का इस तरफ ड्रॉ करता है V2 ना. सी मैग्नीट्यूड इज V2, सो दिस इज Vp victorially, this is minus velocity of wedge. Now this is the direction, velocity of P with respect to wedge, and this is theta. So therefore we can write V1 by V2 is equal to tan theta. सिंपल है ना, पूरा एकदम जियोमेट्री से आ गया. V1 by V2 is equal to tan theta. और भी मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए. What you can do in a more simple way actually. Say this one, ये रॉड आएगा, रॉड तो नीचे ही जा रहा है ना. So if the rod goes downward by this distance, the rod goes by x1. So where will the wedge move? Obviously the wedge will move along the ground. So the displacement of the wedge is x2. And obviously from this diagram you see x1 by x2. So x1 by x2 is equal to tan theta. That is v1 equal to v2 tan theta. If you want the relation between accelerations, that's also same. So a1 by a2 is equal to tan theta.